Dear student, good morning to all of you. Today we discuss here the last preparation of carboxylic acid from the Grignard reagent called as the alkyl magnesium halide. Okay. So dear student, we take the last chemical reaction how to prepare the carboxylic acid by using the Grignard reagent called as the RMgX complex called as the alkyl magnesium halide complex. Okay. So now we take the reaction. What here? The preparation of carboxylic acid from Grignard reagent. What? From the Grignard reagent. How to prepare the carboxylic acid by using the Grignard reagent? So you know when the RMgX means what? Alkyl magnesium halide. So when the RMgX means alkyl magnesium halide called as the GR, short form GR called as Grignard reagent, is react with a dry ice. The solid dry, it means the solid CO2, the solid CO2 called as dry ice. So we take the CO2, C double bond O, it's also right in the form of what here? CO2. So when the Grignard reagent means alkyl magnesium halide is react with the dry ice, it is called as what here beta? It is called as the dry ice. Okay, it means the solid carbon dioxide called as the dry ice. This reaction is take place in presence of dry ether. What here? In presence of dry ether. Now in this reaction, first this CO2 group is directly attached in between the RMg. And ये bond के अंदर ये इसको ऐड करना है बेटा. So what we get? We get R single bond COO, clear? Then Mg single bond X. It is called as what here? Mg complex. Mg called as what here? Magnesium complex. Clear है बेटा? When a Grignard reagent means alkyl magnesium halide is react with dry ice, that is CO2, in presence of dry ether. In this reaction, this CO2 will be added in between the RMg bond. So we take RCOMg. Now this RCOMg further breakdown will be hydrolysis. So what we get? We get here these bond are break. Clear? So this OH is attached to Mg and this H are attached to this O. So what we get here? We get here R single bond COOH attached to what here? MgXOH. So it is called as what here? Carboxylic acid. Clear? So in this way we prepared what here? The carboxylic acid by using the Grignard reagent और alkyl magnesium halide. क्लियर बेटा? इस एक्सप्रेशन क्या लिखना है आपको? देखो क्या लिखेंगे बेटा? When the alkyl magnesium halide means Grignard reagent is react with dry ice means CO2 in presence of dry ether, it form the alkyl magnesium complex. This alkyl magnesium complex further hydrolysis, it form the what here? Carboxylic acid and magnesium hydroxide. क्लियर है बेटा? Now second example, ये देखो याद रखो बेटा. In the second example, this R is replaced by what here? CH3, and this X replaced by any group of halogen. You know the four halogen: fluorine F, fluorine Cl, bromine Br, iodine I. So this R replaced by CH3. Example number first, example number second. CH3 single bond Mg, single bond Br. It is called as methyl magnesium bromide. Is react with same here O double bond C double bond O called as CO2 in presence of dry ether. Clear? What we form? It form the what here? So methyl magnesium bromide. In this reaction, this CO2
it's also write in the form of COO or what here, or CO2. So the CO group are attached to what here, these in between this CH3. So what we get? So we get what here beta, CH3 single bond and what here, CH3 single bond C double bond OO attached to Mg single bond Br. Now this Mg complex further hydrolysis. So what we get? We get here CH3COOH attached to MgBr and then OH. It is called as what here? Acetic acid. It means when this R replaced by CH3, it is called what here beta? It is called as the methyl magnesium bromide. It is called what here? Alkyl magnesium halide. So what we get? We get acetic acid. यानी सिंपल देखो रिएक्शन क्या हो रही है बेटा, ये R को रिप्लेस CH3 से किया, S को हेलोजन से रिप्लेस किया, तो रिएक्शन का पैटर्न पूरा सेम रहेगा, सिर्फ ओनली चेंज द what here atoms. So if the atom change, so name of product also change. Here carboxylic acid, here what here acetic acid. Clear beta? So in this way we finish the preparation of carboxylic acid. Clear? तो यहाँ पे बेटा हमारा पोर्शन प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड फिनिश हुआ. अभी कुछ क्वेश्चन नहीं आपको एग्जाम में आते हैं, सीईटी में या फिर नीट में या फिर स्टेट बोर्ड में आते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस और आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्टेंट. रिएक्टेंट दिया हुआ रहता है आपको और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है क्या होता है. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है आपको, क्वेश्चन यहाँ पर आता है बेटा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस. कंप्लीट द following reactions. Complete the following reactions. Or second question, identify the product of following reaction or identify the product of the following reactions. Now some question that is called as what here we tell as first reactions CH3CH2. First reaction CH3 single bond CH2 single bond C triple bond N. Now what we get a product, first second reaction, number 2 reaction, what here question is there, CH3CONH2. So CH3 single bond C double bond O NH2. What do we get product? Third reactions. Now third reaction, complete the following reaction, CH3 C2 C6H5 C6H5 C double bond OO C2H5. Now what we get the product? Now last reaction, number 4th reactions CH3MgBr. What here? CH3MgBr. Now what we get the product? जैसे क्वेश्चन आपको आते हैं बेटा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, या कोई भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा आता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन और आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रिएक्टेंट. सिंपल रिएक्शन है जो मैंने आपको पढ़ा है, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के जो भी रिएक्शन है वही पैटर्न पूरा सेम है. क्लियर है? देखिए पहले रिएक्शन कौन सी है बेटा, फर्स्ट रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ हेयर व्हाट हेयर, सो इट इज nitriles, CN called as nitrile. So by using a nitrile, how to prepare the following product? Clear है बेटा? So in this reaction, what we get a product? So we take the chemical reactions here. ठीक है बेटा? So when a nitrile, now complete this reaction. From nitrile we prepare the aldehyde and ketones. ये reaction है बेटा. So when a nitrile, इट इज कॉल्ड CN और C ट्रिपल बॉन्ड N. याद रखो बेटा, इसको CN लिखते हैं या इसी ग्रुप को बेटा हम लोग CN भी लिख सकते हैं. CN व्हेन अ नाइट्राइल ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl. सो इन दिस रिएक्शन व्हेन द नाइट्राइल इज रिएक्ट विद रिडक्शंस, इट मींस दिस 1H आर शिफ्टेड टू दिस एटम and this H are shifted to this atom. So what we get? So we get here the product second here
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड HCl। यानी यहाँ पे रिएक्शन क्या हुई बेटा, जहाँ का एक H यहाँ शिफ्ट किया और एक यहाँ पे H शिफ्ट किया। अब जो HCl है वो पूरा जो HCl है वो शिफ्ट किया N के पास, तो क्या बन गया वो CH3, दिस CH3 CH2 देन दिस CH ट्रिपल बॉन्ड चेंज डबल बॉन्ड NH and then HCl. Now this group are further break down in presence of HOH. Means what? Hydrolysis. So what we get here? So we get here beta this 2H are shifted to this NH2. It means loss of this group, and oxygen are shifted to what here? This CH. So what we get? We get a CH3, CH2, CHO, and loss of NH4Cl called as ammonium chlorides. Clear but? Okay. So in this way it is a preparation of what here aldehyde by using a nitrile. ये reaction जो मैं लिखा आपको स्टडी मतलब आपका ये टॉपिक हो चुका, वो टॉपिक भी से क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो रिएक्शन आपके पास लिखी हुई है, याद रखो कैसे रिएक्शंस कैरी ऑन करते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड रिएक्शंस फ्रॉम अमाइड, इट इज कॉल्ड एज अमाइड। So amide are used from the amide prepared what here carboxylic acid. So amide on directly hydrolysis HOH. So what we get? What we get in this reaction? This hydrogen are shifted to this atom. Loss of ammonia molecule. This OH are shifted to this carbon. So what we get? We get here CH3 COOH. Plus loss of NH3 called as ammonia gas. It is called acetic acid. Means what here? Acetic acid. It is called as what here beta? So it is called as the aldehyde. What here? Aldehyde. Third reaction by using stir. It is called as stir. So from stir we also prepared what here? The carboxylic acid. So when I stir is a directly hydrolysis HOH in presence of dilute HCl or dilute H2SO4 in presence of dilute H2SO4. So what we get? We get here same, this hydrogen are shifted to this oxygen and this C2H5 attached to this OH. So what we get? We get a C6. What we get beta? We get here C6H5 C double bond OH called as the benzoic acid plus C2H5OH called as the ethyl alcohol. It is called as what here? Benzoic acid. Short form में BA लिखी हमने, BA called as benzoic acid. Next here last when magnesium halide, मतलब ये रिएक्शन जो देखा बेटा हमने यहाँ पे कौन सी? From the what here? Grignard reagent. ये रिएक्शंस कई क्वेश्चन वहाँ पर आया देखो by using CH3MgBr complete the following reaction। तो ये पूरी जो रिएक्शन है बेटा, ये जो पूरी रिएक्शन है ना, ये all this reaction are this। क्लियर है बेटा? यानी जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जो रिएक्शन है ना कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया गया आपको, तो ये क्वेश्चन जो दिया गया इसका जो आंसर है वो ये है बेटा। क्या आंसर है इसका? सो व्हेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्लियर इज रिएक्ट विद CO2 इट फॉर्म द व्हाट हियर कॉम्प्लेक्स ऑन हाइड्रोलिसिस फ्रॉम द एसिडिक एसिड। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है बेटा, ये वाला, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस फ्रॉम फर्स्ट नाइट्राइल वी गेट व्हाट हियर अल्डिहाइड, सेकंड अमाइड वी गेट एसिडिक एसिड, थर्ड ester we get a what here acetic acid or benzoic acid Ba, and last from the Grignard reagent it is called as GR called as Grignard reagent, what methyl magnesium bromide it forms the what here the acetic acid. So in this way this question asked in examination complete the following reaction। इस तरीके से हमारा बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फिनिश हुआ। इसके बाद हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। ये नोट्स जो भी होगी आपके, जो भी मैंने पढ़ा चुका हूँ, आपकी नोट्स कंप्लीट करना है और कुछ प्रॉब्लम है तो बताना है मुझे, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच।